do you think rapid revisions is enough for preparation, and did you use rapid revisions for any subjects? हाँ मोस्टली जब एंड का टाइम आता है लाइक जब तुम्हारे साथ तो 2 months बचे हैं अब तो एट द एंड तो मेन वीडियोस कोई नहीं उठा सकता सो मैंने भी ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स के रैपिड रिवीजन ही उठाए थे. Hi guys and welcome back to my channel. My name is Girija and today I have a very special guest on my channel, Dr. Kartik, who's going to guide us about the FMGE exam and how to pass it. This is going to be a total on-point video with no extra bakwas. This is just going to be to the point, and so keep watching. If you need to skip onto any important topic that you want to watch, I'm going to provide all the timestamps below. And if you have any other questions that will not be covered in the video, you can ask us on our Instagrams, which I'll mention on the screen, and also in the comment section below. So let's get ready and start this episode with all the secret strategies to crack FMGE in one go. So first of all, Dr. Kartik, welcome to my channel, and today I am so excited to have you here. What are your tips, your strategies? Everything is very important for us to know. So my first question for you is, can you please give us a brief introduction of how the exam is conducted? Okay, so this is a computer-based exam. The exam has 2 parts, and each part comprises of 150 questions each. And to solve those 150 questions, they will give you 150 minutes exact. And between the 2 parts of the exam, there will be a 2 hours break. Okay. So you can go out in the 2 hours break. You can go. You can have water. You can go to washroom. You can eat something. It's totally fine. Okay. So basically, it's just a battle of 300 minutes for 300 questions, which will decide your fate. Exactly. When it comes to sources for FMG, earlier there were no sources, but right now we have so many apps in the market. Which one did you choose? Okay, so I chose Marrow. Okay. By the way, this video is not sponsored. I wish it was, but it isn't. So you have been a Marrow user since when? Like, when did you buy the app? Exactly, to be precise, around 2 years before. Okay, so in your 4th year? Yeah, in my 4th year. So, did you use any other sources for QBanks? Like, most of the people, they choose one source. But there are so many students who choose one source for videos, one source for QBanks. Did you do that, or did you just stick to one source? No. Personally, I only chose Marrow for everything, for the videos, for the lectures, for the QBanks, for the tests, everything. I just one app. Yeah. And did you go for any offline classes? Like many people go for institutions like DAMS or other institutions who conduct offline classes. Did you go for any offline classes? Precisely, I didn't go for any classes, but yeah, I joined a test series once in Delhi, that's it. Before your internship, like when you were in India? Yes, when I was in India due to COVID, I joined one test series. But do you think going for one online source is enough? Personally, like I can speak for Marrow as I chose Marrow. So yeah, Marrow is totally sufficient to crack any exam, whether it's FMG or INSCT or NEET PG. Yeah. And if you talk about preparing for FMG, say for example, there's an exam after 2 months. Yeah. Similarly, you were in the same situation. Yeah. Like you had an year before preparation, 6 months, 2 months. When did you start preparing for the examination? Okay, so my views on this are like, I won't say like I took only 2 months to crack FMG. There's one phase known as when you are in your MBBS journey. Sometimes you study something, sometimes you don't study. So in that phase also, like there are many things which you learn during your MBBS journey which will help you in the exam unknowingly. Yeah. But when you consider about like preparing for the exam, I took around 3 months of dedicated period. Okay. Yeah. So if you had to divide your journey into a pre-dedicated period and dedicated period of studying just for FMG, like where there was just one goal for this exam, when did you start your preparation? So my pre-dedicated period was around May, when like we just got the notice that that the FMG exam will be conducted soon, but there was no tentative or no final date. Yeah. But as soon as during the, I guess around 25th May or May end, when the official notice for the application forms came, that time we got to know that on 30 July it's the exam. So after that, after 25th May, it was a dedicated period. And before that, it was pre-dedicated. Okay. So can you say that you prepared whole and soul for this exam in just a matter of 2 to 3 months? Yes. So if someone is watching this before 2 to 3 months of exam,
don't be anxious. You have an example over here that you can still crack it. Yes. And when it comes to giving the actual FMG examination, can you please divide the subjects into matter of higher weightage, medium weightage, and low weightage for us? Okay, so personally, when I was like making my schedule of the next 3 months, also like in how many days I have to complete one subject or how much time I have to keep for revision, what I did was I kept it in. I divided the whole MBBS 19 subjects into 3 groups. Okay. First is the group in which the questions come above 20, Okay. which comprises of mainly 4 subjects. Okay. It's medicine, surgery, obs gynae, and PSM. Okay. So Then these four are the highest weightage. these four are the highest Okay. weightage. Then comes the subjects in which the questions come between 10 to 20, Okay. and these are the subjects which are a bit scoring, Okay. in which like subjects will like ENT, ophthalmology, pediatrics, Yeah. Pharmacology, pathology. These subjects will come Of moderate importance. of moderate importance. And then there are some subjects in which the questions come around 5 to 6, Okay. like anesthesia, psychiatry, Radiology. dermatology, radiology, Okay. orthopedics. So this is how I divided them. Okay. So this is a good approach actually for if you want to prioritize the subjects. This is a better approach. But now, as you mentioned, a few subjects of lower weightage. Yeah. If someone does not have time, can you skip these subjects? And did you skip any subjects during your Okay. preparation? So yeah, honestly, I skipped some subjects. Like I skipped anesthesia, Okay. I skipped radio, I skipped derma. Okay. I skipped them. But it's like you never skip a whole subject fully. Yeah. You should practice the at least PYQs or QBanks. or mini tests. Okay. QBanks as much as you can. Okay. Or maybe like when you practice the grand test, at that time you get familiar with some topics, and if like some topics get repeated in the exam, that's good for you. Yeah. You mentioned the thing about solving QBanks. Yeah. Many people don't solve QBanks just because they think अभी तो मेरा ये subject नहीं हुआ, I'm not done with the subject yet, so I'm not going to solve the QBank of that subject. Or maybe I'm not done with the entire set of 19 subjects, so I'm not going to attempt grand tests or mock tests. What was your approach while solving QBanks or GTs? Okay, so the first thing I knew was that like even if you study for whole 5 years, my feeling is that you will never be confident on each and every subject. तुम कभी किसी subject को लेके तुम ये नहीं बोल सकते कि तुम्हें 100% आता है. हाँ. Nobody is God. Yeah. Nobody is guru ना. Yeah. So it's like जो question solve करने वाली चीज है ना, it's like कि फर्स्ट ऑफ ऑल इस किसी भी ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने के लिए तुम्हें क्वेश्चंस को फेस करने का करेज चाहिए. सो टू गेट दैट करेज द बेस्ट थिंग इज टू प्रैक्टिस. सो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग एज अर्ली एज पॉसिबल. रोज तुम जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हारे लिए बेटर है. तुम्हारे करेज बनेगा टू सी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, टू फेस वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस. मैं ये चीज़ें हमेशा बोलता हूँ और जो भी मेरे फ्रेंड्स वगैरह मैं उनको ये बोलता हूँ कि जब तक तुम्हारा एग्जाम नहीं हुआ है, एग्जाम्स के एक दिन पहले भी अगर तुम 1000 क्वेश्चन करो एंड तुम्हारे सिर्फ 10 सही हुए हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता उस चीज से. Okay. तुम कितने क्वेश्चन सही कर रहे हो, कितने गलत कर रहे हो, वो तुम्हारी सक्सेस डिफाइन नहीं करता. बट तुमने कितना उस चीज पे तुमने कॉन्फिडेंस पाया तुमने. Exactly. क्योंकि एग्जाम डे बहुत अलग है. Okay. एग्जाम डे इज वेरी डिफरेंट. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिक थिंग विच यू नीड इज टू द करेज टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस. Okay. Yes. When did you start solving grand tests before your preparation? Like, was it a month before, or did you solve it since the beginning? Obviously, I didn't start it, like I didn't solve for all the 3 months, but for 1.5 months, Okay. I solved the grand test. मैंने इस तरीके से करे थे कि I used to solve, like firstly, I made a schedule. Okay, in every 10 days, I would give one grand One test. grand test. Then every 1 week, then Okay. every 3 days. This is how you increase the intensity Yeah. of doing, because at the end you have to gather the stamina to sit in this exam for 5 hours. Exactly. That's bit challenging. Yeah. It's like you have to go, you have to give one set 150 questions, Yeah. then you take a break, then you have to again go and you have to again face the next different 150 questions. Yeah. You need the stamina. Yeah. Like, if a person has not given grand tests or hasn't solved enough questions, do you think it will be very difficult for that person to face the exam day? Personally, I think that it would be difficult because since इसके मैंने बताया कि मेरे पास 2 साल से मैरो था, बट ऑब्वियसली मैं भी एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ. मैं रोज तो नहीं पढ़ रहा था. देयर वर मंथ्स जहाँ मैं चिल कर रहा हूँ, नहीं पढ़ रहा. बट जब भी अब तुमने सोच लिया है तो तुम कभी तो उससे पढ़ते हो.
द थिंग जिसने मुझे हेल्प करा वो कि जब भी मैरो पढ़ता था, जितने भी वीडियोस करे होंगे, मैं हमेशा उसके क्यू बैंक साथ में लगाता था। लाइक तुमने वीडियो करा तो मैं नीचे उसका रिलेटेड क्यू बैंक मिल जाएगा। तो क्वेश्चन सॉल्विंग की प्रैक्टिस बहुत पहले से थी। Okay. And question solving, I think, gives you exposure to the various types of questions that can be asked. हाँ, क्योंकि इस FMG एग्जाम में, नीट पीजे किसी भी एग्जाम में, स्पेशली FMG में, तुम्हें हर तरीके के क्वेश्चन दिखेंगे। देयर विल बी वन लाइनर्स, देयर विल बी केसेस, देयर विल बी कॉम्प्लिकेटेड केसेस। हर तरीके के क्वेश्चन होंगे। अब मैं तुम्हें एक बहुत बेसिक एग्जांपल देता हूँ। बहुत बेसिक एग्जांपल है। एक क्वेश्चन आएगा तुम्हारे पास जिसमें 3 तरीके से लिखा होगा, विच द फॉलोइंग इज ट्रू, नॉट ट्रू, लाइकली, अनलाइकली। सो अब तुम कंफ्यूज नहीं होना है उस टाइम पे। तो वो तुम्हें क्वेश्चन से सिखाएगा। और जब हम QBanks की बात करते हैं, हर सोर्स में रैपिड रिविजन्स भी होते हैं। रैपिड रिविजन के चाहे आप वीडियोस देख लो या रैपिड रिविजन के नोट्स देख लो। डू यू थिंक रैपिड रिविजन्स इज इनफ फॉर प्रिपरेशन एंड डिड यू यूज रैपिड रिविजन्स फॉर एनी सब्जेक्ट्स? हाँ, मोस्टली जब एंड का टाइम आता है, लाइक जब तुम्हारे साथ तो 2 मंथ्स बचे हैं, अब क्योंकि मैं हमेशा से मैरो यूज कर रहा था, तो तुम मैरो के टीचर्स से फेमिलियर हो, तुम थोड़ा बहुत उसके कंटेंट से फेमिलियर हो, तो एट द एंड तो मेन वीडियोस कोई नहीं उठा सकता। सो मैंने भी ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स के रैपिड रिवीजन ही उठाए थे। ओके। हाँ। अब अगर मेजर सब्जेक्ट्स जैसे आपने कहा कि ऑब्स, गायनी, PSM, मेडिसिन, सर्जरी, इनका वेटेज ज्यादा है। फॉर एग्जांपल, अ पर्सन हु हैजंट स्टडीज these subjects or who hasn't completed the main videos yet, अब टाइम तो बहुत कम है, पर ये सब्जेक्ट्स किए बगैर आप पास नहीं कर सकते। So true. क्या इनके लिए आपके लिए रैपिड रिविजन्स परफेक्ट है? हाँ, अभी तुमने बोला तो मेरे शक्ल में थोड़ी स्माइल आई। इसका रीजन ये था क्योंकि मेरे साथ सर्जरी और ऑब्स गायनी का सेम केस था। लाइक टिल 1 जून मैंने सब्जेक्ट्स एक बार भी अच्छे से नहीं पढ़ रखे थे। अब मुझे था मैं क्या करूँ, कुछ तो करना है। मेन वीडियोस 100 वीडियोस है, उसमें घुस नहीं सकते, टाइम ही नहीं है। फिर मैंने ट्रस्ट करा रैपिड डिवीजन पे मैरो के, जो कि बहुत अच्छा था। उसने आराम से सारे टॉपिक्स इतने इजीली करवा दिए कि एग्जाम तो क्रैक हो गया। Okay, so if at all you are a person who's going into the anxious spiral that you haven't completed any big or major subjects, then rapid revision is the key for you. You can go for rapid revision, but here we are speaking as of Marrow. हम किसी और सोर्स की बात नहीं कर रहे क्योंकि वो tried and trusted नहीं है. Yeah. For me, Marrow is tried and trusted, so I would say for that. Because even I use Marrow, so I don't have any idea about the other apps. So if at all you are a Marrow user, then rapid revision is enough, as Exactly. Dr. Kartik is explaining that he did it within 2 months, because these two are very big subjects. Even for surgery, there are more than 80 videos and more than 100 videos for obs gynae. Exactly. So don't panic. You can just do these major subjects using rapid revisions. Yeah. And when you were solving rapid revisions, do you feel the notes were helpful as well? The notes were really helpful because मैं ऐसा पर्सन हूँ, मतलब मुझसे ज़्यादा वीडियोस देख के नहीं होते। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे रहे हैं जिनको मैंने नोट से ही मल्टीपल रिवीजन्स कर करके ऐसे समझाया मैंने उनको। मैं वीडियोस देखने जाता ना, मुझे नींद आ जाती है। I feel sleepy. But rapid revisions can be a savior. This is what I've learned from my journey. They are a savior. Especially जो मैरो के रिवीजन वीडियोस हैं, they are a savior. Okay, and if someone is doing major subjects or has done the major subjects, do you think for short subjects or the subjects of moderate or low importance, they can be done through rapid revisions? Yeah. Even those are enough? Even those are enough. At then, मैं बताता हूँ बेसिक पॉइंट क्या है कि तुमने मान लो एक, चलो ENT की बात करता है। अब कोई बोलेगा कि ENT किया, मैं तो बुक पढ़ के आया हूँ। कोई बोलेगा मैं 1500 पेज की बुक पढ़ के आया हूँ। कोई बोलेगा मैंने सिर्फ 150 पेज के 150 पेजेस के मैंने रैपिड रिवीजन किए। एंड कोई बोलेगा मैं ENT के 700 पेजेस के मेन वीडियोस पढ़ के आया हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि जिसने ज़्यादा पढ़ा है, ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसा है क्या कि उसी का हो जाएगा, जिसने 150 पेज पढ़ा उसका नहीं होगा? नहीं है। एट द एंड द स्किल विच यू नीड इज टू अप्लाई द नॉलेज। एंड वो नॉलेज कैसे अप्लाई करोगे? जब तुम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे। सो any notes, any lecture without practicing questions is incomplete. Okay. When you combine these two, then you get the results. Okay. अब बहुत लोग, जैसे ये गलती हम डिस्कस कर चुके हैं कि बहुत लोग ग्रैंड टेस्ट नहीं देते या बहुत लोग QBanks नहीं सॉल्व करते। आपको क्या लगता है और क्या गलतियाँ होती है लोगों से FMG की प्रिपरेशन करते टाइम? मतलब जो मुझे बहुत बेसिक गलतियाँ लगती है ना, मतलब गलतियाँ नहीं है, बट इट इज द सराउंडिंग विच इज सर्वाइविंग। सबसे पहले ये एग्जाम तुम्हारा खुद से है। इसमें तुम्हारा दोस्त के कितने मार्क्स आ रहे हैं, उसकी कौन सी रैंक आ रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे 150 आए, किसी के 250 है, वो एक ही लेवल पे है। पीयर प्रेशर को साइड करना है। पीयर प्रेशर को नेगेटिवली अफेक्ट नहीं करना, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, तुमने कहीं से सुन लिया कि लाइक मान लो कि
तुम इस सोर्स का फार्माकोलॉजी पढ़ रहे हो एंड तुम्हारा दोस्त है कि मान लो उस सोर्स का पढ़ रहा है एंड उसके बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, देन यू स्टार्ट डाउटिंग योर नोट्स एंड योर सोर्स. सोर्स चेंज नहीं करना चाहिए. दिस इज द ब्लंडर विच पीपल डू. एंड नॉट जस्ट मी, लाइक मैं भी जब इस जर्नी में था मैंने भी यूट्यूब पे वीडियोस देखे जिन्होंने पास कर लिया है टीचर्स के, वो भी ये बोलते थे ऑलवेज ट्रस्ट योर सोर्स एंड नेवर चेंज योर सोर्स बिकॉज एवरी सोर्स इज गुड. Every source is good. Yes. So basically source change नहीं करना चाहिए. And what do you think about the myths that people have about FMGE exam जो हमने सुन के हम डर जाते हैं? हाँ, सबसे पहला मिथ जो मैंने बहुत सुना है, पता है मैंने अपने दोस्तों में बहुत सुना है. सबसे पहला मिथ पता है क्या है? ये है कि जून वाला एग्जाम हार्ड होता है वो पास नहीं हो पाएगा, लेकिन दिसंबर वाला इजी होता है उसमें ज़्यादा बच्चे पास हो जाते हैं. द बेसिक जब मैंने पेपर दिया और अब जब मैं उसके बारे में सोचता हूँ क्योंकि मैंने अभी जून वाला एग्जाम दिया, मैंने उसके पहले के एग्जाम के PYQs करे ऑब्वियसली करे. जब तुम उन सबको लेके बैठते हो तुम सोचते हो ना द एग्जाम इज बैलेंस्ड. द एग्जाम इज बैलेंस्ड. किसी में कुछ डेस्ट स्टफ होंगे तो किसी में कुछ इजी मॉडरेट आ जाएंगे, किसी में कोई मॉडरेट होंगे कोई वो होंगे, तो एग्जाम बैलेंस्ड है. तो सबसे बड़ा मिथ है छोड़ दो कि जून वाला आएगा तो क्लियर होगा ही नहीं, दिसंबर वाला है वही क्लियर होगा. ये सबसे बड़ा मिथ. और अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं मान ले तो बहुत बार ऐसे होता है पार्ट 1 टफ आ जाता है, पार्ट 2 इज कंपैरेटिवली इजियर. सो इफ एट ऑल you attempt part 1 and वो अच्छा नहीं गया, so what do you do in the break time? Like what was your experience when you went for the exam and do you feel that students miss out on a few questions just because part 1 अच्छा नहीं गया तो उसके एंजाइटी में part 2 भी खराब हो गया? ये सेम सिचुएशन मेरे साथ हुआ था. मेरा एक्सपीरियंस कैसा था कि मैंने अपने पार्ट 1 के सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छे से तैयारी करी थी बिकॉज आई वाज लाइक कि मैं पार्ट 1 में बैठूंगा एंड आई विल स्कोर आराम से 90 to 100 और 110. तो मैं सेकंड पेपर के लिए बहुत रिलैक्स रहूंगा कि 150 क्वेश्चंस में से मुझे 50-60 स्कोर करने होंगे तो मैं एग्जाम पास कर लूंगा. मैं इस थॉट से गया था. जब एग्जाम आया हमारा इट वाज वे टफ. मैं एग्जाम 1 से निकला एंड मैं खुद बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गया था कि यार ये क्या हो गया. एग्जाम 1 ही इतना टफ हुआ है और एग्जाम 2 में तो मेजर सब्जेक्ट्स आने हैं. मेडिसिन नहीं आया, अभी सर्जरी नहीं आया, ऑप्स का ही नहीं आया, तो अब क्या होगा. बट स्टिल अब तुम्हें पता है दैट तुम उस कुएं में कूद चुके हो. यू आर देयर नाउ एंड अब नेक्स्ट 150 क्वेश्चंस है जिसमें यू हैव टू गिव योर बेस्ट. सो मैंने भी उसी थॉट से गया. मैं अपना बेस्ट दिया सेकंड पेपर में, काम रहा एंड करना ही करना है, वो हो गया. सो बेसिकली when it comes to being tough क्या आपको part 2 easy लगा? Like आप कह रहे हैं कि exam balanced है, so do you still have hope while giving part 2? Exactly, you should have hope because हमारे केस में part 2 easy आया ना. The ENT op था, even ops gynae was easy. Okay, so that is also a very hopeful situation guys कि इतने बड़े subjects से डरने की जरूरत नहीं है. Exactly. पेपर easy आ सकता है. हाँ. और अगर आप कैलकुलेट करें स्टडी स्केड्यूल की, ठीक है ये तो रहा एग्जाम डे का, पर आप जब रोज एग्जाम्स देते थे जीटी या मिनी टेस्ट, डिड यू हैव अ स्ट्रेटजी फॉर सॉल्विंग जीटीज एंड डिड यू अप्लाई द सेम स्ट्रेटजी? हाँ, मेरे केस में जो मैं जिस स्ट्रेटजी से मैं जीटी सॉल्व करता था मेरा वही सेम स्ट्रेटजी से करा. बेसिक थी कि पहले वो क्वेश्चंस करो जो तुम्हें आते हैं, फिर जो नहीं आते उनको बाद में टाइम देना. वही करा एग्जाम में. एंड डू यू थिंक दैट यू शुड हैव अ स्ट्रेटजी व्हाइल सॉल्विंग द एक्चुअल एग्जाम? क्योंकि बहुत लोग ऐसे अप्रोच से जाते हैं कि हाँ हम देख लेंगे जो होगा. सो डिड यू गो फॉर दिस अप्रोच और डिड यू फील दैट स्ट्रेटेजाइज्ड अप्रोच हेल्प्ड यू टू पास द एग्जाम? हाँ, जो जिस स्ट्रेटजी से मैं जीटीज मतलब इट्स नॉट अ स्ट्रेटजी, इट्स लाइक जब तुम ग्रैंड टेस्ट प्रैक्टिस करते हो एग्जाम से पहले तुम्हें एक हैबिट बन जाती है. इट्स नॉट अ स्ट्रेटजी, इट्स अ हैबिट. You don't have to change the habit. The habit has to be same. Because you are familiar in that way only. तुमको नया स्टंट करोगे तो it will not help you. और जब आप प्रिपरेशन करते थे तो प्रिपरेशन में what approach did you have? Like some people have an approach of hourly studying कि I will study for these many hours, or some people have a topic wise strategy for their schedule कि I have to complete these many topics, फिर चाहे उसमें 2 घंटे लगे या 20 घंटे लगे, मुझे आज ये इतने topics करने. What was your study strategy while preparing? No, for me it was like the topics thing. Like I have a schedule. Okay, so in this 1 week I have to complete these many topics or these many subjects. So I used to do that target because at the end, what I think is it's not about how many hours you study. It's about okay, these are your 19 subjects notes. In these there are all the topics which you need to learn, which you need to master, you need to practice. So you should go with by the topics thing. How many topics you can cover in how much time, that's better. Okay. If at all you have to give an hourly approach, like
some students need an hourly approach कि आपने कितने घंटे पढ़ाई की थी, तो on an average आप कितने घंटे पढ़ते थे रोज? अगर सारा देखो एन एवरेज 10 hours a day I used to study, but it's like कि आप कोई ये नहीं बोल सकता कि like day 1 से 10 hours पढ़ने बैठ जाओ, कोई नहीं पढ़ सकता. You start increasing, like फर्स्ट डे मैं बैठा 5 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, फिर 10 घंटे हुआ, फिर एग्जाम से 2 weeks पहले 15 घंटे भी हो गया. हाँ, it So happens this you way. gradually increased your timing. Yeah. So what was your lowest and highest timing for study? Okay, the highest was I guess 16 to 17 hours. That's too much, but it's okay. You can Yeah. do it. And the lowest was even 3. Okay. Yeah. It's like कि the most important thing क्या है? It's not about increase at a time. जैसे जैसे दिन पास आएंगे एग्जाम के, तुम्हारी एंजाइटी बढ़ती रहेगी. उस एंजाइटी को यूज करो to increase your study hours. Yeah. Not to decrease them. And do you feel you should have a schedule for giving the exam? Like for example, बहुत लोग रात में पढ़ने वाले होते हैं, बहुत लोग दिन में पढ़ने वाले होते हैं, तो आपने आपका study schedule किस हिसाब से होती है? Because क्योंकि एग्जाम डे के दिन तुम्हें सुबह 7:30 पे सेंटर रिपोर्ट करना है. Okay. और तुम्हारा 9 बजे एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा. Okay. सो इट्स लाइक कि ऑब्वियसली अगर तुम नाइट आउल हो, वो तुम्हें चेंज करना ही पड़ेगा. चाहे तुम स्टार्टिंग में मत करो, बट एग्जाम के 1 महीना पहले तुम्हें चेंज करना ही पड़ेगा. एंड इवेंचुअली मैं भी ऐसा था, लाइक आई यूज्ड टू स्टडी इन द इवनिंग्स, इन द लेट नाइट, एंड देन सुबह लेट उठना. बट इवेंचुअली व्हेन यू स्टार्ट वेकिंग अप अर्ली, यू रियलाइज दैट यू हैव अ लॉन्गर डे. Yeah. You have a more study hours. Yeah. That's it. एंड अब एग्जाम दिन की हमने बात कर ली है, तो प्री एग्जाम एंजाइटी की तो आपने बात कर ली कि हाँ ठीक है एग्जाम में एंजाइटी होती है. एग्जाम के बाद क्या था? वंस यू वर डन, वंस एक बार हो गया ना, तो सबसे पहला फीलिंग सच में आता है हो गया. या अब मतलब पास आएगा फेल आएगा ठीक है, वो तो जो होगा देखा जाएगा. इस चीज के लिए पिछले 3-4 मंथ से तुम लगातार लगे हुए थे, एंड अपनी लाइफ से लगे हो, पिछले 5 years से MBBS कर रहे हो. एक बार बैठ के हो गया, देखता है. एंड जब रिजल्ट आया उस दिन को बहुत खुशी थी उस रिजल्ट. जिस दिन रिजल्ट आया ना, इट वाज लाइक मैं तो कमरे में बैठ के चिल खाना खा रहा हूँ आराम से. दोस्त आ रहा है, बोला रिजल्ट आ गया तेरा. फटाफट ऐसे डाउनलोड करा, अपना आईडी नंबर डाला एंड देखा पास. ओ माय गॉड, इट हैपेंड. बेस्ट फीलिंग. बेस्ट फीलिंग तो बाद में आई. सबसे पहले आया कि दिल मन तुम्हारा शांत हुआ, रिलैक्स हुआ. फर्स्ट यू आर डाइजेस्टिंग इट. एग्जैक्टली. इट्स डन. एंड देन फिर तुम खुशी से फूट जाते हो कि oh my God. हो गया. हाँ. सो अब अगर कोई एग्जाम दे रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे? इज दिस एग्जाम टू टफ? कैन दे क्रैक इट? व्हाट इज योर फाइनल मैसेज फॉर स्टूडेंट्स? ओके, सो मेरा इस चीज में द फाइनल मैसेज इज दैट, पहली बात ये मिसकंसेप्शन अपने माइंड से निकाल दो कि दिसंबर वाला एग्जाम इजी है, जून वाला टफ है. ऐसा कुछ नहीं है. एग्जाम बैलेंस जाएगा. और ये थॉट अपने माइंड से निकाल दो कि एग्जाम में फेल करने के लिए बना रहे हैं. ऐसा नहीं है. अगर आपने सच्ची में तुमने हार्ड वर्क करा है एंड तुम फोकस्ड रहे हो, तुमने अपने गोल्स जो तुम छोटे छोटे टारगेट्स बनाते हो अपनी जर्नी में, वो तुमने टाइम से करे हैं. एंड मेनली तुमने जीटीज पे, क्वेश्चंस पे तुमने अच्छे से टाइम लगाया, तुमने करेज पैदा किया, तुमने वो डर अपने मन से निकाल दिया. बिकॉज जीटीज देने का मेन मतलब ये नहीं है कि तुम्हें जीटीज करके तुम्हें उसमें 300, जब तुम अगर तुम 200 प्लस ही ला रहे हो तो तुम्हारा कुछ होगा. तुम्हारे 100 आ रहे हैं तो जीटीज में फेल हो तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता. ऐसा नहीं है. वो करेज लाना, वो हर एक सेकंड में कि अब ये क्वेश्चन किया, इसके बाद कोई कौन से भी सब्जेक्ट से, कौन से भी टॉपिक से, कौन से भी डिजीज से अलग से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है. उसको फेस करने का, तुम्हारे माइंड को उसको अडेप्ट करने का, समझने का, वो एक्सपीरियंस लेना बहुत जरूरी है. Exactly. उस पर ध्यान दो, आराम से चिल रहो. मेरा क्या है कि जैसे तुमने 9 सब्जेक्ट कर लिया ना, जीटीज देना स्टार्ट कर दो. जस्ट स्टार्ट गिविंग इट. धीरे धीरे तुम्हारा स्टेमिना बढ़ेगा. फिर तुम धीरे धीरे तुम जीटी से तुम्हारा एनालिसिस भी बनेगा, तुम उससे भी कुछ क्वेश्चन टॉपिक सीखोगे. इवेंचुअली तुम्हें एट दिन सब कुछ एग्जाम के दिन तुम्हें काम आएगा. जब एक बार तुम्हारा एग्जाम हो जाएगा, तुम बैठ कर सोचोगे ना खुद पे कि यार मैंने ये करा था, ओह मैंने ये भी करा था, ओह इसने भी ऐसे हेल्प किया था. तुम्हें नहीं पता कि कौन सा क्वेश्चन तुमने कब कहा किया हो, वो तुम्हें सेम एग्जाम में दिख जाए. क्योंकि एट द एंड डिजीजेस, ड्रग्स, टॉपिक्स, ऑर्गेनिजम्स सब कुछ लिमिटेड है. Exactly. जो है यही है. उसके अलग से तो कोई बीमारी पैदा नहीं हो रही. Exactly. बस फिर. And most importantly, I feel that a lot of people had this misconception that rapid revisions are not enough, or you should switch sources. So these two myths have been cleared successfully. Yeah. And your journey was so relatable that I know every medical student can relate to it. And so many students have these questions in their minds. If you have any other questions that you want us to solve, please mention it in the comment section below or on my Instagram.
and we'll be happy to make another video for you guys. For today, this was enough, and if you still haven't subscribed to my channel, please do it. And if you are doubting that if you're going to pass this exam or not, this is your sign that you're going to pass the examination, and all the best for your preparation. And congratulations, Dr. Kartik, on clearing this exam in the very first attempt. We are so happy to have you on our channel. Thank you so much. It was a great interview indeed. But as I always say in every video, don't forget to have your cup of positivity and keep going. Exactly. Just keep going.